अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, welcome you all to this another session of e-Ta'aleem, and we are in 20th session, 20वां सेशन है ये e-Ta'aleem का, और तकरीबन ये 7th week, अगर मैं गलत नहीं हूँ, if I'm not wrong, we are in 7th week now of lockdown. We hope inshallah we get some ease inshallah in coming days, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala open our masajids again. May situation become such that masajids are open again and we can present ourselves in masajids for our prayers, for our namaz, for our iftari, for our taraweeh. Don't know when is it going to happen, but we all need to wait and see. इंतज़ार करें और दुआ करें कि अल्लाह फिर से मस्जिदों को हमारे लिए खोल दे, कि ताकि वहाँ पर हम जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत जिस तरह हम पहले किया करते थे, और ख़ास करके रमज़ान में जो कसरत के साथ लोगों की हाज़िरी होती थी, तो फिर से हमें अल्लाह वो मौका अता फ़रमाए कि हम मस्जिदों में हाज़िर हों। Before I start with my topic, just a quick announcement, and I want you all to spread this message to whomever you can. Kal inshallah we are going to bring in a program which is going to be more of discussion. So it's not going to be solo, just me talking with you. There is going to be one of the brothers, Zakir Hussain, who will be joining with me in that program, and the topic of that program is in regards to bullying. So just to get better insight into it, why is it important and what are the consequences if someone is bullied, and how parents they can watch out whether if their child is bullied. So I want everyone to tune in tomorrow especially and pass this message on to all parents. And again inshallah मैं उर्दू में भी उसमें कुछ बातें पेश करूँगा, क्योंकि बुलिंग सिर्फ बच्चों तक या स्कूल तक महदूद नहीं होती, बल्कि बुलिंग इट कैन हैपन एट वर्क प्लेस, इट कैन हैपन एनीवेयर। और हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मतलब इसके क्या नुकसानात हैं और किस तरह ये किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट करता है। तो इंशाअल्लाह tomorrow we are bringing that program at same time 6 o'clock inshallah al-azim, when I come live Monday to Wednesday, and tomorrow is going to be our 21st session, so 7 weeks complete inshallah. Yesterday we started with the topic of earning halal, and there were few things, and yesterday it was more to do with the ayats of Quran. There were ayats of Quran mentioned, and from those ayats we learned that Allah subhanahu wa ta'ala, He has ordered us. Like there were ayat in which Allah subhanahu wa ta'ala, He mentioned about people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and also there was message to mankind. आम इंसानियत के लिए भी एक मैसेज था और ईमान वालों के लिए भी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि जब भी हम कोई चीज़ खाएं तो हलाल और तय्यब चीज़ खाएं. We should eat halal and tayyib. And just to remind you, halal is anything that Sharia says it's halal. Halal वो चीज़ होगी जिसे शरीयत कहती है कि हलाल है, और तय्यब वो है कि जिसको तबीयत अच्छा समझे कि उसे वो खाए. एक और आयत बताकर इंशाअल्लाह Hazrat has mentioned a brief summary of all those ayats which were covered yesterday, and one of the ayat which I'm going to mention today. And then inshallah we will dwell into a hadith of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah ta'ala Quran Majid में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, खाओ हमारे दी हुई सुथरी चीज़ें और अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम उसकी
तुम उसको उसी को पूछते हो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला he says that oh who believe. So this is a reminder for all those who are believers and all those who have faith and who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala he says कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, कि खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें. So whether you earn it, and this is the reminder what we need to give to all of us, that when we earn ourselves, that doesn't mean that it is risk what I am earning, although we are earning, lekin the one who is the ultimate provider of this risk is Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the reason Allah subhanahu wa ta'ala he says, eat from the risk what I have provided you. और फिर फरमाया कि वशकुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम उसी को पूछते हो. So you need to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. You need to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala if you do ibadat, if you worship Allah subhanahu wa ta'ala. And just to briefly mention, what was the summary of what do we get from these ayats. So very first thing our ulama, they give the lesson what we need to learn from these ayats. Very first कि इस्लाम किसी को भी बेकार रहने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि बार बार कस्ब हलाल व अक्ल हलाल की ताकीद करता है. यानी Islam doesn't let anyone to sit idle and not to do anything. Islam says we need to earn our livelihood, we need to earn our risk. Likewise, we need to eat whatever is halal for us. और इसी के साथ साथ हज़रत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, when it mentions about one needs to work hard or one needs to earn his livelihood, Hazrat Luqman, he gave some nasiha to his children. And what nasiha he gave, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐ बेटे हलाल कमाई के ज़रिए इफ़लास से निजात हासिल करना. जो शख्स गिरफ्तार फ़क्र हो उसमें 3 बातें पैदा हो जाती हैं. He said to his children, or he said to his son, कि हलाल कमाई के ज़रिए इफ़लास से निजात हासिल करना. By earning halal, you need to come out from iflas, you need to come out from poverty, come out from the situation which can lead you to ask help from someone or beg to someone. So here he is saying it's only through halal means, or it is only through earning halal you can save yourself from poverty. और फिर कहते हैं कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाए फ़क्र में और फाक़े में, यानी if someone who gets himself in the situation where he becomes poor or poverty comes to him, then there are 3 things that person he might face, or there are 3 things that come in that person. फरमाया दीन में नरमी आ जाती है. अल्लाहु अकबर. एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि गुर्बत से बचना चाहिए. अब हदीस का मफ़हूम है बिकॉज इट कैन लीड टू कुफ्र, इट कैन लीड टू गोइंग आउट ऑफ द फोल्ड्स ऑफ इस्लाम. लेकिन यहाँ पर फरमाया गया कि दीन में नरमी आ जाती है. एंड वी सी समटाइम्स इफ समवन हु इज़ पुअर जस्ट टू दीन, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास इनफ अपने खर्च चलाने के लिए साजो सामान नहीं होता है, तो ऐसा आदमी कभी कभी दीन में उसमें नरमी आ जाती है. ही बिकम्स वेरी कंप्लेसेंट विद दीन, ही वोंट बी दैट स्टेडफास्ट इन दीन. फरमाया कि अक्ल में फतूर आ जाता है. लाइकवाइज उसकी अक्ल में भी फतूर आ जाता है. वॉट एवर ही थिंक्स इज़ ऑल गोइंग टू बी हिज ऑल थिंकिंग इज़ गोइंग टू बी सराउंडेड बाय हिज पॉवर्टी. कि जब भी वो कोई चीज़ सोचेगा उस पर उसकी पॉवर्टी का एक शैडो होगा. अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट एवरीवन गोइंग टू बी लाइक दैट, बट पॉवर्टी लीड्स टू दिस थिंग. इसी तरह फरमाया गया मुरव्वत और लिहाज ख़त्म हो जाती है. फरमाया दैट पर्सन, there won't be any modesty left in that person, and that is the reason we see once someone who is used to begging, then he will beg and he will never ever look for earning halal. And we have seen people once they get into this habit of asking money to people, then they don't stop it. They keep asking money, and they become totally dependent on that. And it's not allowed for any Muslim to beg
if he has got enough at his home, and again he should try to work hard so that he shouldn't come into situation where he has to put his hands in front of anyone. कि अपने आप को बचाना चाहिए इस काम से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको अपने हाथ किसी के आगे बढ़ाने पड़े। और इसमें एक बहुत ही अभी बस मेरे जहन में एक चीज़ आई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाना रवी यानी टू बी मॉडरेट इन योर लाइफ स्टाइल गिव्स बरकत इन योर रिस्क. So everyone knows, I know, you know how much we earn. So we shouldn't be trying to live a very lavish life. And moderation in anything, moderation in the way you eat, moderation in the way you dress, moderation in the way you spend your time or spend your money in yourself. फरमाया कि अगर कोई आदमी मियाना रवी इख्तियार करे, if he adopts moderation in his life, that will give barakat in his rizq, that will give blessings in his rizq. और फिर फरमाया कि सबसे बढ़कर ये कि लोग उसे हकीर समझने लगते हैं. अगर कोई गरीब हो, गरीब in the sense especially someone who doesn't like working and he just bees dependent on people, then that person is not looked at with respect. हम घर ही की मिसाल लेना कि अगर बच्चे घर में हैं और वो बड़ी उम्र के हो जाएं और अगर वो काम नहीं करते, पेरेंट्स के दिल में फीलिंग आने लगती है. इफ़ देयर आर 2 brothers or 3 brothers, 2 of them if they are working and one if he is not working and just dependent on other brothers, then he loses respect. तो जो भाई या जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों को खिला पिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह you will be rewarded, but one shouldn't be living a life where he should be dependent on anyone until unless situation makes him like that, then that's different thing. But किसी को अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए. और दूसरी बात ये कि once we are mentioned or once we are said in Quran and once we are said in the hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam that we need to earn our livelihood, then that doesn't mean we can earn it the way we want. As we went through the ayats of Quran, there are ways which are given to us कि जब भी हम कमाएं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जो कमा रहे हैं वो हलाल है और हलाल ही कमाई से अल्लाह बरकत अता फरमाता है. There is one waqia which is mentioned in this kitab. Hazrat Musa alayhi salam, he saw one person बहुत ही तदर्रो और आहुजारी से दुआ मांग रहा था. There was one person, crying in dua, and he was, supplicating in as if he was in dire need of something. कि बहुत ज़्यादा आहुजारी के साथ he's crying in his dua. And as the Musa alayhi salam, when he saw him, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala कि ए अल्लाह तू इस बंदे की दुआ कबूल क्यों नहीं फरमाता. Hazrat Musa alayhi salam, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, why is it you are not accepting dua of this person who is crying so much in his dua for his dua to be accepted. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि मूसा, अगर ये शख्स इतना रोए कि अपने आप को हलाक कर दे और अपने हाथ इतना उठाए कि आसमान तक पहुंच जाए, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा. So there was wahi, there was revelation which was sent to Hazrat Musa alayhi salam. And Hazrat Musa alayhi salam, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, why is it this dua of this person is not accepted? So Allah subhanahu wa ta'ala, he sent wahi to Hazrat Musa alayhi salam, and which Allah subhanahu wa ta'ala, he said to Hazrat Musa alayhi salam, if this person was to cry so much that he finishes himself, he kills himself, कि फरमाए इतना रोए कि रो के अपने आप को हलाक कर दे. And even if he was to raise his hands to the extent that his hand would reach the skies, फरमाए कि अपने हाथ इतने उठाए कि आसमान तक पहुंच जाए, even then I'm not going to accept dua of this person. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, I'm not going to accept dua of this person. And what is the reason? Then Allah subhanahu wa ta'ala, he says कि इसके पेट में हराम है. Whatever he eats is haram. उसकी पुष्ट पर हराम है, यानी whatever he is wearing, that is from haram. और उसके घर में हराम है, यानी whatever he has at his home, even that is from haram. So from this we understand, if you earn haram
and then you expect your dua to be accepted, then your duas are not going to be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want your duas to be accepted, then you need to ensure that you earn halal, you eat halal, and you wear your clothes which are bought from halal money. हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल रोज़ी हासिल करना फ़र्ज़ के बाद एक ख़ास फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says that, after to earn halal rozi or to earn halal rizq, फरमाया गया कि तमाम फ़र्ज़ के बाद फरमाया कि ये भी एक फ़र्ज़ है। सो जिस तरह नमाज, रोज़ा वग़ैरह इबादत ये फ़र्ज़ हैं, इसी तरह इन इबादत के बाद टू अर्न योर लाइवलीहुड, to earn your rozi, to earn your rizq is also obligation which is put on us by Allah subhanahu wa ta'ala, or it is obligation on every Muslim. और इसी के साथ साथ एक और हदीस है जिसमें फरमाया गया कि हलाल रोज़ी हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है. It is must for every Muslim to earn or to look for halal rozi. So alhamdulillah, when we see, this has been made as obligation on Muslims to earn halal. So you can't think it's optional thing, जब दिल का चाहे करूँगा, दिल चाहे तो ना करूँ. लेकिन यहाँ पर फरमाया गया कि हलाल रोज़ी कमाना और to earn halal livelihood is fard after you have fulfilled your other obligation like namaz, roza, and other ibadats which becomes farz depending upon if you meet those conditions. हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो माल दौलत हलाल तरीके से इसलिए कमाए कि भीख मांगने से बचे और इसलिए कमाए कि अपने अहलो आयाल को खुशहाल रखे और अपने पड़ोसी पर मेहरबानी करे, वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा. सुभान अल्लाह. So there are three things mentioned here in this hadith of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. कि Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he says, anyone who goes out to earn his halal livelihood, to earn his halal rizq, and the intention is कि अपने आप को वो भीख मांगने से बचाए, so that he can safeguard himself, he can protect himself from asking help from anyone, from begging to anyone. So this is first intention. फरमाया इसलिए कमाए कि अपने अहलो आयाल को खुशहाल रखे. Again, the intention to go out to earn is to look after his family, to look after his children, to look after his parents, और अपने पड़ोसियों पर मेहरबानी करे, and to be good to his neighbors. So it's been said Allah Ta'ala is going to meet that person on the day of judgment in a way that his face is going to be shining more than the full moon. Subhanallah. Subhanallah. And remember one thing, alhamdulillah, to look after your family, to spend on your family is again an act of charity. ऐसा हम समझे नहीं कि घर वालों पे खर्च नहीं करना चाहिए, घर वालों पर, बच्चों पे. और जैसे कि मैंने कहा कि it shouldn't be, you need to differentiate between wasting your money and spending your money. कभी कभी होता है कि लोगों के पास अगर दौलत हो तो फिर वो दौलत को खर्च करना शुरू कर देते हैं इन अ वे कि वो फजूल खर्ची हो जाती, unnecessary spending. इससे तो बचना चाहिए क्योंकि क़यामत के दिन फरमाया गया, there will be different ways how person is going to be tested in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and one phase or one situation is going to be where person he is going to be asked few questions, and until he doesn't answer those questions he won't be able to move from that place. And amongst those questions, two questions are going to be, from where did you earn your livelihood, from where did you earn your risk, and how did you spend it. तो कोई ये ना समझे कि मैं हलाल कमाता हूँ तो अब हलाल पैसा मेरे पास आ गया, now I can spend it the way I want. No, you can't do it. You have to spend it in a right way.
And if you do israf, if you just spend it, without thinking, where this money is going, you will be held responsible for every penny, every money what you spend. लेकिन अहलो अयाल पे खर्च करना, कि जैसे एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास कुछ दिरहम और दीनार हो, and if he spends them on the family, or either he gives to people who go for struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and again if he gives something in charity, amongst these three ways where he spends, the dirham which is spent on family is liked and loved by Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever neglect your family. Of course, there needs to be balanced approach, because whatever we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, that is going to be safeguarded and that is going to be protected up to the extent in hadith. Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he says, anything what you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, it's not that it will stay the way it is. The way we have, or someone brings in the animal and looks after it, and then that animal becomes big, is being said same way कि जब कोई अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह उस सदक़े की परवरिश फरमाता है, और एक छोटे के सदक़े का, इफ़ यू गिव लिटिल बिट इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फरमाया गया कि रोज़े महशर में या हिसाब व किताब के दिन पहाड़ के बराबर उसको हिसाब छोटे सदक़े के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम जहाँ पर घर पर खर्च करते हैं, हम अल्लाह की राह में भी खर्च करें। इसी के साथ साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स 40 दिन तक हलाल खाना खाए, अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर फरमा देता है और उसके दिल से ज़बान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। So Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, any person for 40 days, if he eats just halal, something that is halal, Allah ta'ala will enlighten his heart. And Allah subhanahu wa ta'ala, whenever he speaks, inshallah al-azim, he will speak, Allah subhanahu wa ta'ala will fill his heart with wisdom, with hikmat. And whenever he will speak with wisdom which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with. So one thing what we get from this hadith, if you see any person, who is wise, especially, people of faith, people with iman, then this may be because of the risk what they eat. And again, when we say, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says 40 दिन 40 days, this doesn't mean that you have to just eat halal for 40 days और फिर इसको छोड़ देना है कि 40 दिन खा के फिर छोड़ देना है। यहाँ पर उलमा ने फरमाया कि 40 दिन 40 रोज़ फरमाया, इससे मुराद ये है कि if someone does anything for 40 days, that becomes the आदत of that person, that becomes आदत, that becomes habit of that person. तो फरमाया 40 दिन में ऐसा नहीं कि इसको 40 दिन खा के फिर छोड़ देना है, बल्कि फरमाया गया कि 40 दिन करने के बाद this will be the habit of that person and you need to carry on with that habit. और हलाल रोज़ी कमाना सिर्फ ये आम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अंबिया इकराम भी अपनी रोज़ी के लिए वो they used to strive, they used to work to earn their halal livelihood. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई खाया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा से ये दूसरी हदीस है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई यानी सुतार का काम करते थे। So there are two different profession which are mentioned, that Hazrat Dawood alayhi salam, he used to earn, or he used to eat from earning with his own hand. So he used to work and earn for himself. And likewise Hazrat Zakaria alayhi salam, he used to do the work of carpenter, joinery. So again, this is the profession of these Anbiya. So even this shows, like these Anbiya who were so close to Allah subhanahu wa ta'ala, even they themselves, they used to work for their livelihood, and then they used to eat from whatever they used to get from working. हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर सवाल का एक दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उस पर फ़क्र यानी मोहताजी के 70 दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह अकबर।
Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, any person who opens the door of muhtaji, one door of muhtaji on himself, Allah subhanahu wa ta'ala is going to open 70 doors. फरमाया कि अल्लाह ताला उस पर फ़क्र के 70 दरवाजे खोल देता है. So abstain from asking help from anyone. It's only in a situation where you feel helpless, then that's different thing. Of course, if someone is asking for religion, someone is asking for deen, that's different thing. But especially when it comes to personal situation, जैसा कि मैंने पहले कहा, मियाना रवि इख्तियार करें. Adopt moderation. Be moderate in your lifestyle. Don't live your life in a way. कभी कभी आजकल ये हो जाती है कि situation with finances being easily available, people they get themselves involved in so much of debt that they themselves they don't realize where they are going to end up. मिसाल के तौर पर people they will buy flashy cars on finances. People they will try to buy all sorts of gadgets what they want on finances. But we need to look at how much can we afford. And if you open one door of asking from someone, then Allah subhanahu wa ta'ala will open 70 doors of muhtaji, dependency on that person. And as I've said, I have seen people for years and years, once they get into habit of asking from someone, they keep on asking again and again, again and again. So try to stay away from this habit, earn halal so that you can just survive yourself from whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives you. हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि वो मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे. सुभान अल्लाह. तो दिस सहाबी, he comes to Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam and he says that make dua for me that Allah subhanahu wa ta'ala makes me mustajabud da'wat. कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे. Now what is मुस्तजाबुद दावात? फरमाया मुस्तजाबुद दावात उस बंदे को कहा जाता है जिसकी कोई दुआ कभी भी रद्द ही नहीं होती. कभी किसी उसकी दुआ रद्द ही नहीं होती. और ये अजीम मनसब उस बंदे को हासिल होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस शोज़ दैट हिज क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि उसको ये मकाम अल्लाह देता है कि वो कभी भी दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट हिज दुआ. सो व्हेन हज़रत साद ही सेड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दैट या रसूलल्लाह कैन यू प्लीज़ मेक दुआ फॉर मी दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुड मेक मी मुस्तजाबुद दावात. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही सेड टू हज़रत साद, खाने को तैयब कर लो, यानी हलाल खाओ, तुम मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे. मेक योर फूड हलाल. वॉट एवर यू ईट, यू मेक श्योर यू ईट हलाल, यू विल बिकम मुस्तजाबुद दावात. तब कहीं ना कहीं अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी इबादत में हमें लुत्फ़ नहीं आता, सो वी नीड टू डू एहतसाब, वी नीड टू इवालुएट द रिस्क व्हाट वी आर अर्निंग, इज़ इट हलाल, और इफ़ इट्स हलाल कि अगर उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसके वजह से हमें हमारी दुआएं कबूल नहीं होती. हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, कौन सा ज़रिया माश सबसे अच्छा है? व्हाट वे ऑफ अर्निंग इज़ बेस्ट? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर वो तिजारत जो ख़यानत और धोखे से महफूज हो. So Huzur sallallahu alaihi wasallam, he says someone earning for himself with his own hand. When I say with his own hand, means he himself, he strives, he works hard to earn for himself. And then he says that tijarat, that trading, that business, फरमाया जो खयानत और धोखे से महफूज हो, that is free of mistrust or that is free of any deception. तो इसमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भी बिज़नेस करें, ख़ास करके जो लोग बिज़नेस करते हैं, कि आप बिज़नेस में ख़यानत और धोखे से बचें. एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ आवर ग्रेट इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु.
And this is very famous waqia, and you must have heard it many times, but because now there is mention in this hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam that one needs to stay away from any mistrust or any deception when he is doing business. Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu, he used to trade in textile, clothes. And there was one person, he was working in partnership, or maybe there was a person who used to work with Imam Azam Abu Hanifa. And there was one piece of cloth that was for sale, but it had slight defect in it. Hazrat Imam Azam, he said to that person who was in shop, if you are selling this piece of cloth, then you need to inform the person who is buying about the fault, about the defect which is there. Imam Azam, after some time when he came back to his business, came back to his shop, he saw that piece of cloth is sold. कि वो कपड़े का थान या वो कपड़े का रोल वो बिक गया. इमाम आज़म ने अपने उस काम करने वाले से या वो जिस शख्स को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कहा कि that cloth is sold. He said yes. He said, did you inform that person about the defect which was there? He said, I forgot to do that. Imam Azam ne, halake there was certain amount that must have come from the sale of that cloth, but rather than separating that, Imam Azam, he gave anything was there from the proceeds of all sales for that day in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because he said, I don't want to get myself involved, or I don't want to take for myself something that is doubtful. तो इससे हमें समझ में आता है कि हलाल कमाना, हलाल खाना कितना इम्पॉर्टेंट है. और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाते हैं कि जन्नत में कोई ऐसा जिस्म दाखिल ना होगा जिससे हराम ग़िज़ा दी गई हो. So any body that is made up of, or any body that was fed on something that is haram will not enter Jannah. And this last hadith, and then inshallah I will conclude this dars. Well, there are many hadiths here, but I will mention two and then inshallah we will finish. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma की रिवायत है, फरमाया कि जो शख्स 10 दिरहम में कोई कपड़ा खरीदे और उनमें 1 दिरहम हराम कमाई का हो, तो अल्लाह ताला उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहे. अल्लाहु अकबर. So it's not that it needs to be completely haram. So here the example, Hazrat Abdullah bin Umar, he says that if anyone who buys any cloth which is for 10 dirham and out of them only 1 dirham was of haram, 1 dirham was for haram, and if he wears that and if he offers his namaz is not going to be accepted as long as that cloth is on his body. और इसी के साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि जिस किसी ने हराम का 1 लुक़मा खाया 40 दिनों तक उसकी कोई नमाज मकबूल नहीं. So anyone who has 1 luqma, 1 morsel of something that is haram for 40 days, his namaz is not going to be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is another narration of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, फरमाया कि जो गोश्त हराम ग़िज़ा से बनेगा जहन्नम उसका ज़्यादा और जहन्नम उसकी ज़्यादा मुस्तहिक़ है. So any flesh in your body that is made of something that is haram, the one that will be deserving of that flesh is the fire of hell. So these were few things which I felt will be good for our brothers and sisters to know in regards to earning halal. If you're earning halal, alhamdulillah, mubarakbad to you, because even when you are away from your home, earning for your family, earning for your parents, earning to give something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, whilst you are away, you still are in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. आप जितने देर तक हलाल कमाने में लगे रहते हैं तो उस वक्त तक आप अल्लाह की इबादत में. That doesn't mean whilst you are working, if time for namaz comes, you say, well, I won't pray namaz because I'm in ibadat. No. Farz namaz, they need to be prayed on its appointed time.
But the time you spend away from your family, away from your home, earning your livelihood, even that time is written ibadat for you. And we went through benefits. Alhamdulillah, the benefit of earning halal is as well, when you are at work, alhamdulillah, this will save you from getting involved in any action that can lead you to committing sin. And Allah subhanahu wa ta'ala has kept barakat in halal. Even if you earn little, you will see Allah subhanahu wa ta'ala will that will be enough for you. कि आप थोड़ा भी कमाएं तो अल्लाह उसमें बरकत रखेगा, और आप देखेंगे कि थोड़े से रिस्क में भी आपको अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल में हम सब को हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। और साथ ही में अगर इस दर्स में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाए। Again, reminder for everyone, tomorrow inshallah we are coming with special program which is not a solo program. It's not only me who is going to be talking, it's going to be discussion with brother who is going to join us tomorrow inshallah, and is going to be on the topic of bullying, which is very important, I feel, for us to know and our children to know the impact of bullying and for them to abstain from it. So I request everyone to join us, to tune in tomorrow, to watch this program live, as well as pass this message on to others. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you, me, every one of us safe and protected. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.